गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा गॉस प्रिंसिपल जोटा कि आम तार फील्ड एक्सपेरिमेंट आउ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बोथ देखा। तो यहाँ गोटे तुम लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से पढ़े तेणु जहाँ जहाँ मुझे नोट दूसरी तुम नोट कर आ बुझापी चेष्टा कर। यही गॉस प्रिंसिपल को अदरवाइज कह जाए कंपटीशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कह जाए। तुम ताकू लिखिदे पार कंपटीशन कंपटीशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और गॉस प्रिंसिपल। ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन आम ता विषय आम बुझा। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थिले निश्चय लाइक करिवो एवं शेयर करिवो। तो देख G.F. गॉस जे कि 1934 रे डेवलप द कॉन्सेप्ट दैट टू स्पेसीज कैन नॉट स्टेबल कोएक्जिस्ट एंड दस दे कम्पीट फॉर सेम निशे। ता कहबा मान है जिते दीटा स्पेसीज को आम एका संगे रखीदे से भितर कौन हुए कंपटीशन होता है। केतेबेले कंपटीशन होता है जितेबाला मनकर लिमिटिंग रिसोर्स ऑफ फूड हो बा जहाँ भी आमर बंचापी जो जिनसा आमको दरकार है लिमिटिंग रिसोर्स रे थिबो बा कम मात्रा रे थिबो एवं सेटा सरीगले आमर अल्टीमेटली कौन उपाय नहीं बंचापी से लिमिटिंग फूड को आमे माने ग्रहण करने आम भर कौन है गोटे कंपटीशन चली थाए। ठीक अच्छे। तो ताको से कौन करते डेस्क्राइब करते। ठीक अच्छे। तो दुईटा स्पेसीज केतेबेले भी एका संगे सर्वाइव करि पारंती नहीं जेतेबेले सेमानकर कॉमन फूड रिसोर्स थाए। ठीक अच्छे। तो तांकर प्रिंसिपल थिला तारी उपरे। ठीक अच्छे। तो प्रथमे तुम तार सारांशटा बुझीगल बर्तमान आम ताको एक्सप्लेन करवा। ठीक अच्छे। This competitive exclusion principle mean that है कौन देती if two non-interbreeding population अर्थात different species है non-interbreeding population do the same thing है समान जिनस करती that is occupy preciously the same ecological niche जितेबाला से माने गोटे सेम इकोलोजिकल निशे दी जन जाक एका सांगरे रुहति को एक्जिस्ट करती सेतेबेले सेमानक भितर कौन हुए कंपटीशन होता है एवं से माने आउ कौन होइथिबे से माने नॉन इंटरब्रीडिंग होइथिबे अर्थात डिफरेंट स्पेसीज आम यदि सेम माने बुझा तार यदि प्रकृत मीनिंग बुझा डिफरेंट स्पेसीज मान भितर कंपटीशन होता है जितेबाला से माने सेम इकोलोजिकल निशे ऑक्युपाई करती बा सेमानकर फूड हैबिट हो बा जेकोसी अदर हैबिट कौन होता है समान थिबो। तब देखो इफ दे आर सिम्पेट्रिक दैट इज इफ दे ऑक्युपाई द सेम जियोग्राफिकल टेरिटोरी है जदि से जियोग्राफिकल टेरिटोरी मध्य समान थिबो। तापर थर्ड नंबर कौन देला पॉइंट if population A multiplies even the least bit faster than population B, then ultimately A will outcompete and completely display B। तो कौन जदि रैपिडली जदि A रो ग्रोथ है ताले से कौन B को कौन करबो से B को डिस्प्ले करि पारे। ठीक अच्छे। तब 4 नंबर पॉइंट कौन देला द डिस्प्लेड स्पेसीज मेक बिकम्स लोकाली एक्सटेंड अर्थात से कौन हम जदि जी डिस्प्ले होगा माने कौन से धीरे धीरे कौन हो एक्सटेंड हो लोप पाई बाय इदर माइग्रेशन और डेथ। तो केमी से लोप पाई लोकाली केमती तार लोप पाइब हुए तो से आउ गोटे स्थान को स्थानांतरण हो किंबा धीरे धीरे तार कौन डेथ हो। तो दुईटा कारण धीरे धीरे तार कौन दो एथे कहबा गले जदि स्पेसीज ए तामने कौन स्पेसीज ए है डोमिनेंट कैरेक्टर नेला एवं सी कौन गला सबू सबू तार फूड रिसोर्स हो बा प्लेस हो ताकू से ऑक्युपाई करदेला एवं बी स्पेसीज कौन है से माइग्रेट करिवो किंबा डेथ करिवो और इट मे अडाप्ट टू द sufficiently distinct niche within the environment so that it continue to coexist non-competitively with the displacing species। ता माने कौन से जगह को एनवायरनमेंट को पड़ेबो जो जगह कि कंपटीशन नथिबो नॉन कॉम्पिटिटिवली अर्थात सेटारे मनकर कंपटीशन जो जगह नथिबो सेही प्रकार जगह से को एक्जिस्ट करिके रहिबो। तब नेक्स्ट देखो competing related species in fact often evolve distinguished characteristics in area where they both coexist।
To be very specific, the principle of ecological replacement or competitive exclusion is generally applied when one group disappear and another seem to take its place in a corresponding or identical niche. तो आम बेसिकली कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशनटा केतेबेले आम स्टडी करूँ बा केतेबेले देखू जेतेबेले देखा जाए जे गोटे स्पेसीज संपूर्ण भाव में डिसअपियर हो गला बा से उभान हो गला किंतु आउ गोटे स्पेसीज ता जगह कौन होला सेटा को सेही स्थान को से ऑक्युपाई करिला ठीक अछि सेतेबेले आम कहि परिबा जे कंपटीशन एक्सक्लूशन कोन ठीक अछि दिस एड is met recognition thus maintaining each species superiority in exploiting slightly different ecological niche. तो बेसिकली यार ऊपर से एक्सपेरिमेंट करथिले तो प्रथमे आम जो से दीटा एक्सपेरिमेंट करथिले तो प्रथमे आम लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को देखिबा ठीक अछि तो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कोन से बेसिकली पारामेसियम को नैथिले एवं पारामेसियम को नेकिना से को प्रकार से ओरेलिया संगे से को प्रकार से कंपटीशन करैथिले ताको आम स्टडी करबा ठीक अछि तो देखो G.F. Gause 1934 use laboratory experiment to test the major prediction of the Lotka Vertera competition model है जो मॉडल अच्छी से मॉडल ना हो लोटका भेल्टेरा competition. During the course of his work Gause experiment with many organisms से बहुत गुड़ा ऑर्गेनिज्म को लेके एक्सपेरिमेंट करथिले but the most well known of his experimental subject were पारामेसिया तो बेसिकली आम पारामेसिया को लेकिन से कौन किए तांकर फेमस एक्सपेरिमेंटा बेसिकली पारामेसिया को लेकिन होता ठीक अच्छे जोटा कि बहुत फेमस होता से अलग स्पेसीज नहीं कि पारामेसियाटा बेसी फेमस होता ठीक अच्छे तब देखो पारामेसिया आर फ्रेश वाटर ciliated protozoan that open several advantages for laboratory work. First, since they are small, they can be kept in large number in a small space and some of their natural habitat are fairly well simulated by laboratory aquaria. तो बेसिकली तांकर पारामेसिया को लेकिन एक्सपेरिमेंट करिवार मुख्य उद्देश्य कौन थिला जेहेतु एमाने करते साइज रे स्मॉल थांती एवं एमान करते लार्ज नंबर पारामेसिया को आमे गोटे छोटो जगह बा स्मॉल स्पेस रे आमे ऑक्युपाई करके रखि परिबा एवं सेमानकर जो हैबिटेट थाए नेचुरल हैबिटेट सेटा बेसिकली समान थाए का सहित लैबोरेटरी एक्वारियम सहित समान थाए तो यही मुख्य तीन कारण पाई तांको कोन होइतला पारामेसियम को लेकिन एक्सपेरिमेंट करवाटा इजी होता इन एडिशन पारामेसियम फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आम देखा ये से बैक्टेरिया को फीड करें ठीक अच्छे बैक्टेरिया को फीड करें तेणु आम ये कहीपर जे तार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो खाद्य रूपे ग्रहण करे आमको बैक्टेरिया को ताको प्रोड्यूस करने बहुत इजी होता है ठीक अच्छे which can be cultured in the laboratory and provide in whatever concentration desired by the experiment अर्थात आम जो जदि बैक्टेरिया हवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो ताको आम कौन इजिली लैबोरेटरी रे कल्चर करि परिबा एमान को खाद्य रूपे मध्य देई परिबा तेणु प्रथम आम देख एमान को भितर जो कंपटीशन है कंपटीशन आम केमती देखा देख ये देख बेसिकली दीटा स्पेसीज भितर से पारामेसियम भितर केमती कंपटीशन है ताको आम लक्ष्य करवा ठीक अच्छे तो देख प्रथम कौन है आम जदि आम भल कि देखा जदि ये आम दुईटा ये नहीं जाओ प्रथम ठीक अच्छे दुईटा आम ग्राफ नहीं जाओ गोटे थी कौन है कोडाटम पारामेसियम कोडाटम को निगला एवं आउ गोटे पारामेसियम ओरेलिया को निगला ठीक अच्छे तो पारामेसियम कोडाटम कौन है जो सिंगल एकला ही से बसवास कला से तार कौन ग्राफटा यही प्रकार है अर्थात कौन है से तार ग्रो कला सेमती जदि आम ओरेलिया को नेबा ओरेलिया कौन है से तार एमती करी ग्रो कला किंतु पारामेसियम एवं ओरेलिया सॉरी कोडाटम आउ ओरेलिया को जो सेम जगार प्लेस करागला से कौन है दी जन भितर कौन है देखागला जे जिते जनकर एमती ग्रो हो जन धीरे धीरे तार ग्रोटा कमी जाऊँगी ठीक अच्छे तो एक से कहले
जे दी जन को जो अलग अलग आम प्लेस करुचु से कौन होकर कंपिटिशन ना तो से ग्रो कर कि सेम स्पेसीस आम सेम जगह रखिपुँ गोटे जगार प्लेस करें भर कौन हो कंपिटिशन बढ़ी जाऊँगी जड़े जे जड़े कौन है ये कौन गला ये बंचीगला आए कौन है एक्सटेंड हो गला अर्थात से कौन है तार कौन है से तार लोप पाईगला धीरे धीरे ठीक अच्छे बा डेथ है कि जदि भी से बंचिले ग्रोथटा बहुत कमीगला ठीक अच्छे कहीं दी जन भर कौन है कोडाटम हो बा ओरेलिया हो दी जन जाक सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा बैक्टीरिया को खाद्य रूपे ग्रहण करती है। तो देख ताको आमे टिके पढ़िबा एबे In one of his most famous experiment, Gause studied competition between Paramecium cordatum and Paramecium aurelia. The question he posed was, would one of these two species drive the other to extinction if grown together in microorganisms where they were forced to compete with each other फॉर ए लिमिटेड फूड सप्लाई तांकर क्वेश्चन थिला जदि दीटा अलग अलग स्पेसीज को आम गोटे जगार प्लेस करुचु ताहले दी जन भितर से माने खाद्य पाई को प्रकार कंपटीशन करें बा करें कि करें ना एवं जदि करें से भितर कौन रिजल्ट आसो ठीक अच्छे। Gause started out by growing pure population of Paramecium cordatum and aurelia in the presence of two different concentration जोटा कि मु तुमको एबे डायग्राम रे बुझेइतली अर्थात दीटा अलग गोटे एठी मनकर Paramecium aurelia को नेले एठी कहला Paramecium जो कोडाटम को से नेले हैला दीटा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिक से देखिले हैला एवं तांकर फूड कोन तांकर फूड हैला बैक्टीरिया जोटा मु कहि दिले एमान को बेसिकली माने बैक्टीरिया ऊपर खाद्य रूप रे ग्रहण करता ठीक अछि। तो ही ऑब्जर्व सिग्मोइडाल ग्रोथ है एटा हूँ कौन एटा हूँ आमर एस टाइप स्ट्रक्चर होची तो ये एस टाइप स्ट्रक्चर कहुए सिग्मोइडाल ग्रोथ है सिग्मोइडाल ग्रोथ विथ बोथ द स्पेसीज विथ ए क्लियर कैरिंग कैपेसिटी एट बोथ फुल एंड हाफ स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन ऑफ द फूड सप्लाई। तो दी जन को जो अलग अलग खाद्य दे दिया गला अर्थात बैक्टीरिया बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दे दिया गला से माने कहला फुली तांकर ग्रोथ है ठीक अच्छे। तापर देखो when grow in present in full and एटा में बुझिले ला the when grow in present of full strength concentration of food the carrying capacity of Plasmodium aurelia was 195 when the foods available was half जेतेबेले ताको कोन ला जेतेबेले फुल खाद्य दिया एमाने 195 थिले ताको जो अधा कर दिया गला द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस स्पेसीज वाज रिड्यूस टू 105 अर्थात 105 को खसी आसिला ठीक अछि। द Plasmodium cordatum show a similar response to the food concentration in the presence of full strength concentration of food एवं से प्रकार कोडाटम को मध्य जेतेबेले पूरा खाद्य दिया होइतिला सेतेबेले तार कैरिंग कैपेसिटी केते थिला 137 थिला ठीक अछि। एट ए हाफ स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन बा अर्थात जो खाद्य को कमे दिया गला द कैरिंग कैपेसिटी वाज 64 है द नियरली 1:1 correspondence between two food level and the carrying capacity of these two species provide evidence that when grown along the carrying capacity was determined by इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन फॉर फूड एबे देख बुझापी चेष्टा कर है तो दी जन को जो अलग अलग आम रखिले एमान कौन ग्रो बढ़ला एटा आम जानिलु किंतु जेतेबेले आमे कौन करबा तांकर खाद्य को अधा करदेबा मनकर ओरेलियम को नियम है तो जितेबाला खाद्य को अधा कर दिया गला एमान को भितर मध्य कंपटीशन स्टार्ट हो गला अर्थात सेम स्पेसीस जो मनकर आम एग्जांपल देखिए बुझा बर्तमान लायन आउ टाइगर ठीक अच्छे दुई जन को भितर कंपटीशन हम जदि डियर पाई खाद्य पाई दुई जन को भितर कंपटीशन है ठीक अच्छे मनकर आम लायन को हटईदेले केवल टाइगर को रखा ताले टाइगर कौन कर
से तार डियर पाइला से डियर को खाद्य रूपे ग्रहण कला मनकर गोटे टाइगर जगार आम 10टा टाइगर रखीदेवा ताले कौन हम टाइगर मान भितर कंपटीशन स्टार्ट हम कि नहीं निहाती भाव में कंपटीशन हम जिते आम सेम स्पेसीस रे आम मान भितर लिमिटेड रिसोर्स हो जाए ताले आम सेम स्पेसीस होते आम भितर कौन होता है कंपटीशन स्टार्ट हो जाए जोटा कि से लक्ष्य कले कौन कोडाटम आउ ओरेलियम भितर से कौन कले ओरेलिया भितर से कंपटीशन स्टार्ट हवा देखिले जे से माने सेम स्पेसीस रे कंपटीशन करूछंती। These results set the stage of Gause experiment to determine whether interspecific competition for food, the limiting resource in this system, would lead to the exclusion of one of the competing species. When grown together, as long as the food supply is ample, both species increase in biomass, but as the food supply approaches exhaustion, the P. aurelia persists while P. caudatum quickly decline until it finally disappear. अर्थात दीटा को जो समान जगह रखी दिगला ओरेलिया तार बंचीगला किंतु कोडाटम धीरे धीरे कौन हो डिसअपियर हो अर्थात कोडाटम कौन है कोडाटम है वीक हो गला एवं ओरालियम कौन ओरालियम हूँ डोमिनेंट है तार स्ट्रेंथ बेसी थिला। An analysis of the relative adaptation of two species shown that P. aurelia is capable of faster population growth and is more resistant to the accumulating waste product than the P. caudatum जो P. caudatum कौन है तार धीरे धीरे से कौन डिसअपियर हो गला आउ P. aurelia बा प्लाज्मोडियम ओरेलिया कौन है सॉरी पारामेसियम ओरेलिया कौन है से तार फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ करला कहीं तार रेजिस्टेंस कैपेसिटी बेसी थिला। The difference in result obtained at the two food concentration support the conclusion that competition exclusion result from competition for food अर्थात फूड पाई एमानक भितर कंपटीशन होता है। ऑल्सो दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली सजेस्टेड दैट रिड्यूस रिसोर्स सप्लाई इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अर्थात आम खाद्य को जी कमे देवा से कौन हुए कंपटीशन बढ़ी जीवो आउ मते से कौन देखिले केवल इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुए नहीं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मध्य होता है। ठीक अच्छे तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक विषय मु प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी तुमको बुझेइथिली जो माने नुआ अछ मु ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक दे देबी सेठी जाके तुम देखि पारो। तापर देखो हमें फील्ड एक्सपेरिमेंट विषय देखिबा। देखो कंपटीशन बिटवीन बार्नाकल्स द बार्नाकल्स कौन हो बार्नाकल्स बालानस बालानोइड्स एंड आम देखा जदि थामालस को स्टेलाटस को देखा ताले आ रेस्ट्रिक्टेड टू प्रेडिक्टेबल बैंड इन द इंटर टाइडल जोन द एडल्ट थामालोस along the coast of Scotland are restricted to the upper intertidal zone while adult balanos are concentrated in the middle and low intertidal zone. Joseph Cannell 1961 found that balanos is limited to the middle and low intertidal zone because it cannot withstand the longer exposure to air से बेसी समय एयर जेहेतु एक्सपोज करि पारे नाही इन द अपर इंटरटाइडल जोन तेणु से कौन हुए से बेसिकली लोअर इंटरटाइडल जोन रे बा मिडिल इंटरटाइडल जोन रे कौन होते रही था। ठीक अच्छे हाउएवर physical factor only partially explain the distribution of thalamus है ताहले एथरे कौन जाना पड़ा जे केवल खाद्य नहीं फिजिकल फैक्टर माने मध्य कौन होते से मानकर जो एक्जिस्टेंस को कौन दे से माने प्रभाव पकई थांती। Connell noted that larval thermals readily settle in the intertidal zone below where the species persist as adult, but that these colonies died out within a relatively short period.
In course of the field experiment, Cornell discovered that interspecific competition with balanos play a key role in determining the lower limit of thermal within the intertidal zone. Because barnacles are sessile, small and grow in high density, they are ideal for field study and survivorship. तो से बेसिकली barnacles को नहीं कहीं स्टडी करते जेहेतु एम स्मॉल एवं बहुत शीघ्र शीघ्र एम ग्रो करी ठीक अच्छे देयर एक्सपोजर एट लो टाइड is an additional convenience for the researcher. Cornell established several studies from the upper to the lower intertidal zone, where he kept track of barnacle population by periodically mapping the location of every individual barnacle on the glass plate. तो तेणु सेठी से कौन कले बहुत गुड़ाक बार्नाकल्स को लेकिना से ग्लास प्लेट रे प्लेस करिकिना ताको स्टडी कले ही एस्टाब्लिश हिज स्टडी एरिया एंड मेड हिज इनिशियल मैप in March and April of 1954 before the main settlement by Balanos in late April. He divided each of the study area in half and kept one of the half free of balanos by scraping them off with a knife. Cornell determined which half of each study site to keep balanos free by flipping a coin. By periodically remapping the study site, Cornell was able to monitor interaction between the two species and the fate of individual barnacles. The results show that in the middle intertidal zone, thermal survive at a higher rate in the absence of balanos. तो balanos रो absence रे thalamus कौन हुए से अधिक मात्रा रे survive करी पारे को जगह रे जोड़ा ची middle intertidal zone रे ठीक अच्छी balanos settle in the density up to 49 individuals per square centimeter in the middle intertidal zone and grew quickly, crowding out of the second species in the process. In the upper intertidal zone, removing balanos had no effect on survivorship by the second species because the population density of balanos was too low to compete seriously. Cornell results provide direct evidence that thermalos is excluded from the middle intertidal zone by interspecific competition with balanos. तब देखो displacement of red wing black birds by ट्राइकलर ब्लैक बार्ड्स तो बेसिकली दुईटा प्रकार से बार्ड्स उपर एबे कंपटीशन विषय से वर्णना करथिले जहा कि होची कोन ब्लैक बार्ड होची जोडा होची रेड विंग ब्लैक बार्ड और ट्राइकलर ब्लैक बार्ड देखो अनयूजुअल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑन कंपटीशन एक्सक्लूजन एक्टिविटी वाज रिकॉर्ड विथ टू स्पीशीज जोडा होची ब्लैक बार्ड रो in California. Red wing had fully occupied a marsh with established nesting territories during February and early March. तो February एवं early March भितर कौन हुए रेड विंग ब्लैक बार्ड कौन करे से तार नेस्ट तैयारी करे then suddenly a colony of tricolor black bird inverted तापर कौन हुए ट्राइकलर ब्लैक बार्ड कौन करे से सडनली तार कॉलोनी एस्टाब्लिश करे लिविंग ओनली ए फ्यू intact red wing territories around the margin है तो यही प्रकार दुई जन को नेस्टिंग बा घर तैयारी से भितर कौन होता है कंपटीशन होता है तो बेसिकली यहाँ हूँ कौन आमर फील्ड एक्सपेरिमेंट है एवं लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट दी प्रकार एक्सपेरिमेंट विषय तुम जान लो तो दुईटा को मिसेक गॉस प्रिंसिपल हुए तो लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो किंबा शॉर्ट क्वेश्चन केवल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पढ़ी पारे किंबा फील्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ी पारे ठीक अच्छे तो आज तो ये या सहित तुम यूनिट 2 टोटाल कंप्लीट हो गला आम यूनिट 3 आ
यूनिट 4 टाक जल्दी कंप्लीट करवा। ठीक अच्छे आशा करूँ तुमको वीडियो पसंद आसो। थैंक यू।